Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually discuss what we spoke about last week. Then कैसा market गया and जैसे current market we have, okay, we have 1 2 3 4 5 6 7 8 red candles in a row. So what most likely can happen, we'll discuss that. We'll look at past data also. ठीक है, थोड़ा सा कि ऐसा इतना selling कब होता है और उसके बाद क्या होता है. ठीक है. So first thing is last week what did we discuss? We were I'm marking Friday. So Friday के बाद weekly analysis था हमारा. So what did I tell you that time? I told you because of price action, simple. This green candle low is a support. Okay, imagine that. यहाँ पे 2 बार बाउंस ले चुका है मार्केट. ठीक है, तो इसके बाद आके जब ये ब्रेक करता है, आई डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीक्स वीडियो कि दिस विल बी अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी उसके नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे. ठीक है, ऑल्सो मैं आपको इन जनरल आई विल क्लैरिफाई सम कंसेप्ट्स ऑफ योर्स. तो दिस इज अ हायर हाई, राइट? ग्रीन कैंडल, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रेकआउट. सो लॉट ऑफ पीपल वुड बी लॉन्ग हियर. तो यूजुअली ना बेरिश लोग कैसे ट्रैप करते हैं ना, इफ यू गेट अ ब्रेकआउट, दैट ब्रेकआउट कैंडल लो बिकम्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी आपको बुलिश बात करता है उसके बाद, देन यू जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर. ठीक है, तो दैट हैज हैपेंड ऑन मंडे एंड मंडे वी क्लोज्ड बिलो दैट ब्रेकआउट कैंडल लो. ओके, मिनी जो ब्रेकआउट हो गया है हमारा हायर हाई का. आफ्टर दैट यू गॉट अ गुड डाउन मूव. लास्ट वीक आई थिंक वाज वेरी इजी. ओके, मेरे हिसाब से. नाउ लेट्स एक्चुअली सी कि इस वीक में व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन. आई जस्ट डू अ मिनी रिकैप आपके लिए, मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमने क्या बात किया था. ओके, सो जस्ट रिमाइंडिंग यू 1 2 3 4 एंड 4 रेड कैंडल्स इन अ रो हो गए मंथली में. तो ये बहुत ही रेयर चीज है, ये हर बार होता नहीं है. तो यूजुअली आफ्टर 4 रेड कैंडल्स व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट अ अप मूव और अ ग्रीन कैंडल. ठीक है, सो लेट्स एटलीस्ट फॉरगेट द अप मूव फॉर नाउ क्योंकि रोज मार्केट कीप्स गोइंग डाउन. ओके, सो लेट्स ट्राई टू कीप आवर हाइपोथेसिस की एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बननी चाहिए. ठीक है, सो अगर एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बननी चाहिए देन ये मंथ का जो ओपनिंग है 23,528, उसके ऊपर एटलीस्ट 1 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए मिनिमम. ठीक है, फॉर इट टू बी अ ग्रीन कैंडल. व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? वैसे आपको ह्यूज इसका डिफरेंस नहीं आएगा. इट्स जस्ट दैट इफ द मार्केट गोज अप यू जस्ट शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बिकॉज द मार्केट हैज बीन फॉलिंग फॉर द लास्ट 4 to 5 months. ठीक है, सी ऑन द वीकली चार्ट व्हाट डू आई सी? I see the market being stuck inside this small range. Okay, so it tried to go up, it failed, and then it's trying to come down. So let's see who wins this jigsaw. ठीक है, मतलब seesaw, sorry. तो ऐसे ही मार्केट रहेगा कि कैसे रहेगा? Let's try to see. But I actually want a closing of a weekly candle या तो 23,800 के ऊपर और I wanted 22,800 के नीचे. Okay, so this 1,000 point range becomes a range for the market. Inside this range, it's going to be very difficult to gauge, you know, who's winning, who's losing. Also, this is a bearish candle. So, okay, so I expect the OTM calls. I don't know the premiums, मैंने check नहीं किए, but if you do get any premium or if I get any premium in 23,800 calls and above, I would like to sell them. Okay, and only at a lower low will I do this. For example, market is going up, the spiking. So if they make a lower low, then only I would sell it with the stop loss. ठीक है, see daily chart पे continuously we are falling since 1 2 3 4 5 6 7 at least 6 days continuous fall था. ठीक है, after the fall we made a pin bar candle sort of, doji sort of a candle. तो reversal pattern के लिए best क्या होता है? ये दोजी या तो पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर यू नीड अनदर कैंडल क्लोजिंग जो हमको नहीं मिली है. यू सी विक आके इट हैज क्लोज्ड इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज ओनली. So this is not a good news for bulls. Okay, if you get something similar to this candle, I would definitely in my weekly analysis video I would tell you that I expect these OTM puts to go to zero. अगर वो ग्रीन होती तो एंड क्लोजिंग आ गई होती तो. एंड आपको एक मैं बॉटम पकड़ने का पैटर्न रहता है. इसका सक्सेस रेशियो इज हायर देन 50%. ओके, तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी वाला थिंग गोइंग ऑन देयर. तो यू नीड अ कैंडल और ये कैंडल का लो टूटना चाहिए एंड द कैंडल शुड क्लोज एंड आफ्टर. सो दिस इज अ बेरिश साइन. ठीक है, पक्का बेरिश का साइन है ये. एंड जो भी ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर यू नीड अ क्लोज. सो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक है ये. सो वी हैव नॉट गॉटन दैट हियर. तो आई एम वेटिंग कि 23,200 के ऊपर इफ वी गेट अ कैंडल क्लोज देन इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस देन, मेरे हिसाब से. For the bulls, okay, so either 23,200 के ऊपर if the market goes or if the market goes sideways, okay, then we'll see. Sideways would not be a great thing actually bulls के लिए क्योंकि then support के वहां आके then it would like spend time. No, that's not a good thing for the bulls. If the bulls are very strong now, usually क्या होना चाहिए? सपोर्ट पे जैसे ही आया वैसे ही प्राइस ऊपर आना चाहिए. That's not happening now. Cool. So in the 15-minute time frame, you see this W. This is the W we are gunning for. इसके ऊपर अगर if it comes, so this level is 23,200. ठीक है, so we want to play this W. We need a W for the bulls. Okay. Then for the bears, okay, seems like a very good 2 times support जो लिया है ना, बहुत अच्छा है ये. For the
I mean for the bears if it breaks down from this. So let's think, for example, market goes up and then comes down and then breaks this. So this would be a perfect thing for bears also. ठीक है? So whenever market comes inside a range, you should become happy. किधर ना किधर आपको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है. ठीक है? So this is a clear range मेरे हिसाब से. See, Bank Nifty also weekly time frame have come. So what would be a good bearish thing? Okay, I discussed that thing, right? Bottom कैसे ढूंढना है? So similarly for the top, you need a green candle. Green candle के high के ऊपर another candle should go and close, and then below this breakout candle, breakout failure आना चाहिए इस पे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? So this is a green candle. above उसके high पे market closed, but वो breakout candle के नीचे we haven't gotten a closing. So Bank Nifty के लिए as per a pattern kind of a thing, I wouldn't say it's too bearish. So Bank Nifty, let's talk about what to do in Bank Nifty. My plan here is going to be 5500 के ऊपर I'm going to try to play bearish. Okay, 5500. But that is too far away. So that becomes useless. So what to do in Bank Nifty? The first thing, just similar to last week, we've taken a support from this level and gone up. Then we've taken a support from here and closed ऊपर जाके, ठीक है? Which means 2 बार market एक level से bounce किया है, ठीक है? Now, if the market breaks that level, it is good for the bears. So what's good for the bulls? Sideways move is good for the bulls, and then a breakout, or very quickly just go up and break this 49,800 level. So Bank Nifty, just remember, I'm going to remember just two things: 49,800 वाला level and 50,500 वाला level. So whenever कोई भी Friday को देखते हो 5500 के ऊपर अगर closing आ रही है, so I personally would consider it bullish. And by the way, just for the bears, if it breaks down from this 48,700 वाला level, I expect it to come down to the next support, which is 47,800 then. ठीक है? Then मुझे कुछ support दिख रहा नहीं है ठीक ठाक, बस एक हो सकता है छोटा सा, ये जो मतलब छोटा गैप बाकी है 48,300 पे, that can be one thing. But unlikely, नहीं उतना गिरे फिर. See, this Sensex is ditto like Nifty, okay? So ditto, same thing. This support is very, very, very strong, 75,300. I mean, the break of this would be very bad for Sensex bulls, very bad. 3 times support, okay? 1 time from here, ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, and then यहाँ से ऊपर गया है, 3 बार गया है already. Perfect trade actually for the bears. If the candle closes below this, is short. I am going to short, I mean. Also, I'm not SEBI registered, okay? In case anyone thinks so. So please consult your financial advisor. See, this is my last like YouTube पे मैंने draw किया था ये, मेरे को याद है. उसके बाद I don't touch this stock, मतलब because I just wanted to cover it for YouTube. So Adani I've covered. So what did we discuss? If you remember, if you recall, so this was a support for Adani. Strong breakdown candle, support टूटा है, has gone to retest, and ये zone में it would have been a great shorting opportunity. Now it is down. So just see, मतलब it has been respected. Simple SR no. And now in Adani as a trader, okay, so you get a W pattern if the price goes above this 26 or 2700 के ऊपर whenever the price closes on the weekly time frame, then you'll get a W. Also you'll get वो range में वापस ये जो range थी पहले की के अंदर it will come back again, which is a very good thing actually. Below, as long as it's below 26,800, I will look for shorting opportunities. जैसे ही उसके ऊपर आ जाएगा W बन जाएगा, that's why I won't be interested in shorting. Actually, by the way, I want to also remind you about gold because see what happens. No, gold is breakdown and then वापस उसके अंदर था वो, ठीक है? So we recommended you somewhere here to buy gold and you got this up move. So what happens? I remember this very well. Okay, when this down move was happening, so people started blaming us. First thing, we didn't tell you to buy it. Okay, we told you we are buying it. That's the first thing. Second thing is, as per technicals, lot of people I remember कि यहाँ पे बोल रहे थे they've taken it because of us. But now that वो इतना ऊपर गया है, I don't think anyone's telling us. So I'm just reminding you कि gold का also this technicals has worked properly. Nikita has covered all of this on her Twitter as well. Consistently, I think daily she posts the charts there. So if you're looking for a daily kind of a thing from us, you can follow Nikita on Twitter. And even in Bitcoin, just reminding all of you, the ones who follow us from Pele. So we have got Bitcoin from here, technical wise. You check on YouTube also. We have given you we think it is a buy from here because of this pole and flag setup. Simple. And then it has gone up. And at this up move, I remember since many weeks, I'm telling you, now I'm not interested in Bitcoin at all unless it comes and gives an retest of its all-time, मतलब previous all-time high. ठीक है, 72,000 पे I'm interested in Bitcoin. Or else if it makes another rectangle like जहाँ पे पैसे ऐसे बनाया था वैसे, ठीक है? So just reminding you.
So that's it, I think, from my video. You let me know if you have any questions. I'll comment and reply to all of you. Also, see how the market goes next week. Okay, so I'll see you in the next week. Bye bye. And please hit the like button, okay, if you liked it.